Hello students, welcome to YouTube live classes. I am Dr. PRUSTY, Assistant Professor for Commerce, RAVENSHAW Secondary School, CUTTACK. Today we will start with another chapter, that is logarithm. So a very important chapter, because if you know about the logarithm, then very difficult problems and very complexity in that problems we can solve. So in this chapter we have to discuss the concept of logarithm, what is logarithm, properties of logarithm and its applications, system of logarithm, then some fundamental laws of logarithm and some applications, standard form and applications, characteristics, how to find out the characteristic and mantissa. So in this your applications, arithmetic operation on logarithm with applications, anti-logarithm and some problems on anti-logarithms, and principles of proportional parts and applications. In the next slide, we have to find out the concept of logarithm. Now, what is logarithm? Logarithm is a mathematical tool used to simplify the complex and difficult calculations, which is not possible in case of your calculator. We can calculate with the help of logarithm. It is very helpful in simplifying the difficult your multiplications, divisions, powers, square roots, etc. We can calculate very easily. And now we have to discuss what are the forms of number. So we have to find out there are two forms. One is your exponential form. This is exponential form, and another one is logarithmic form. Logarithmic form. So if we find out a to the power x is equal to n, this is called your exponential form. And if it is to be converted into your logarithmic form, we should write that is log n or number to the base, that is your a, in this case that is a, and this is equal to x. So this is in the your logarithmic form. Again I repeat, in the case of exponential form, if we take a to the power x is equal to n, then when we have to convert it into logarithmic form, that should be log n to the base a is equal to x. Now you remember, a should not be equal to 0, and also that should not be equal to 1, because if that is your 1, whatever you have to take power, that same value 1 we get. That means 1 to the power 25, this is also 1. But according to the your logarithm definition, logarithm of a positive real number with respect to positive real number except positive real number base except 1. So that should not be 1. That should be more than 1. Is the index or power to which the base must be raised to make it equal to the given number. तामाने आमर जति base अच्छी 2, power अच्छी 4, so this should be 16. तुम्हारा सही base रे जति power by index को तुम्हें बढ़े को चाहिए, यार number भी बात तुम्हारा value भी बढ़ीबो. So this is your in the logarithmic format. So mathematically we can write, if a to the power x is equal to n, then log n to the base a is equal to x. So this is in the logarithmic form. In the next slide comes to the properties of logarithm. So in these properties we have find out there are 5. One is 6 log 1 to the base, any base, you get that value is equal to 0. तामाने आमे जदि log 1 नबा तुम्हारा जे कोनसी वैल्यू नियो, बेस टा को तुम्हें 5 नियो, 7 नियो कि 10 नियो, जहाँ भी नियो, तुम्हारा वैल्यू मस्ट बी बाय इंडेक्स और पावर मस्ट बी 0. तुम्हें जानी चो any base to the power 0 is equal to 1. So log 1 to the power base, any base, so that should be equal to your 0. Log of any number 2, log of any number to itself as the base.
सेकेंड प्रॉपर्टी कहूची जदि बेस आउ वैल्यू बा नंबर जदि सेम हे गला ता माने एठी हमर जदि 5 हबो सो द index or power must be 1 because you know in the exponential format 5 to the power 1 is equal to 5 तेणु जेते बेले बेस और नंबर समान रहिबो मने रख तार logarithm value सदा बेले 1 हबो थर्ड प्रॉपर्टी कहूची logarithm of any number reciprocal to its base should be equal to -1 इति मु गोटे एग्जांपल दोची ता माने आमर से कहूची जदि हम एठी नेले log 5 तार बेस ता तार रेसिप्रोकाल हबो रेसिप्रोकाल केते 1/5 so this should be -1 and if log 1/5 तार रेसिप्रोकाल होची 5 so this also equal to -1 तेनु ये गोटे प्रॉपर्टी मन रख जिते बेले तुमरो बेस और नंबर वो दुईटा तुमरो गोटे आ गोटे रेसिप्रोकाल हेथिबो आइदर बेस रो रेसिप्रोकाल नंबर हेथिबो किंबा नंबर रो रेसिप्रोकाल बेस हेथिबो सेही केस रे logarithm value should be equal to -1 फोर्थ प्रॉपर्टी कहला कोन ना द logarithm of 0 to any base greater than unity is equal to -infinity you have to remember it तामने से कहूची आमे जदि गोटे log नबा बेस नबा ए वैल्यूटा जदि 0 हबो ताहले यार वैल्यू -infinity केतेल हबो ना दिस a is greater than 1 तामाने 1 to 0 आसिला बेलकु माइनस हबो नेगेटिव हबो कमिबो सेति पई माने रखो जदि a greater than 1 हेई थाए 2 3 4 5 एटसेट्रा आमर जदि नंबर इज 0 और तार वैल्यू जदि 0 होबा को चाहिबा ताल तार इंडेक्स होबो केते ना -infinity सेमती जदि a तुमरा लेस देन 1 थिबो सेही a जदि लेस देन 1 थिबो ताहले तुमरा इंडेक्स और पावर हे जिवो infinity दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी log the logarithm 0 to any base less than unity is equal to infinity कोन पई ना तुमरा ए होची माइनस माइनस रहितबो लेस देन 1 थिबो तेनु माइनस रे जतल 0 आसीबो तने बढ़ुची तेनु ये रहइबो पॉजिटिव माने रख ए बळी तुमे मन रखिया पड़िबो जदि ए लेस देन अछि हमर 0 टा तुमरा निश्चित ताटु बड़ हबो तेनु ये पॉजिटिव रे आंसर आसीबो पॉजिटिव इन्फिनिटी जदि तुमरा ए जदि मोर देन 1 हेतिबो तुमर वैल्यू 0 को आनिया गले दिस इज योर -infinity so this is the your fifth property then comes to the last property a log n to the base a is equal to n tenu a log n to the base a is equal to your a to the power this is your a to the power log that value is equal to n tenu ye kemti hobo ame monne kram kon kariba yakko ame suppose x nei jiba let log a to the base a is equal to x then implies that ame bartan ye hochi ko form re na log form re achi ba logarithm form re achi ame bartan exponential form ganiba a to the power x is equal to n देखो हमर a अछि एठी बेस अछि एठी x हमें जोटा को हमें नै थिले तार वैल्यू केते आसिला दिस योर n so you have to remember when a is the base or any number is base log any value to the base the same with this value then we get the answer is this your number n then ये property टी मन रखिबो so these are these certain or 6 number of properties of logarithm comes to the next slide केते उडी हमें या ऊपर एप्लीकेशन बा केते उडी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करिवा देखो प्रथम क्वेश्चन ने कहिची राइट द फॉलोइंग इन द logarithmic form ताले एटा को फॉर्म रछि दिस इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम कहूची 10 to the power 3 1000 is equal to 1000 ये अछि हमर एक्सपोनेंशियल फॉर्म रे से कहूची ताको कन्वर्ट कर logarithmic फॉर्मेट को तेनु logarithm फॉर्मेट कोन
ना जेतबेले लॉगरिथम फॉर्मेट आसे log तुमर एठी आसीबो नंबर तुमर एठी रहइबो बेस इज इक्वल टू इंडेक्स और पावर एटा होची तुमर कोन ना दिस इज योर लॉगरिथमिक फॉर्मेट तेने ए केस रे कोन अछि ना log हमें नबा नंबर केते ना 1000 दिस इज योर नंबर बेस कोडा ना बेस अछि 10 पावर और इंडेक्स केते ना 3 so log 1000 to the base 10 is equal to 3 so this is in the logarithmic format. Next one is you have to cite that is 3 to the power minus 3 is equal to 1 by 27 ताको सेही भली logarithm format रे करिवो log 1 by 27 to the base 3 is equal to minus 3. Third one is given minus that is root over 4 to the 4 power 4 is equal to 16. So log 16 to the base root 4 is equal to 4. 9 to the power 0 is equal to 1. कौन होबो ना log 1 to the base 9 is equal to 0. तेने ए भली तुमे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट रू हमें that is your converted into your logarithmic format. तापरे पुनी रिवर्सल क्वेश्चन देछि write the following in the exponential form. वर्तमान हमर log फॉर्मेट रे देछि आमे ताकू कोन करिवा ना ताकू हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को कन्वर्ट करिवा कोन देछि ना log 128 to the base 2 is equal to 7 आमे याकू ये होछि लॉगरिथम फॉर्मेट अछि हमर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट कोन कहूछि that is exponential form base to the power is equal to value or number it होछि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट रो base to the power or index is equal to value हमर एइथरे कोन ये होछि बेस ताने बेस हला 2 ये होछि तुमरा पावर इज 7 दिस इज योर वैल्यू so this is equal to 128 तेनु ये होछि फॉर्मेट कार ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म रो so this is your 2 the power 7 is equal to 128 देखो आउ के तोडी प्रॉब्लम अछि log 81 to the base root 3 is equal to 8 ताले एक्सपोनेंशियल फॉर्म रे कोन होबो ना root 3 to the power 8 is equal to 81 log 1 to the base a is equal to 0 a to the power 0 is equal to 1 in the exponential form log 0.693 to the base e is equal to 2 so log e to the power 2 that is a log in the exponential form e to the power 2 is equal to 0.693 तेनु एई भली तुमे एक्सपोनेंशियल फॉर्म रे तुमे कन्वर्ट करिवो माउथरे टिके कहि दोछि जेतेबेले एक्सपोनेंशियल फॉर्म देइथिबो सेतेबेले केमिति लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करिवो सो log नंबर टू द बेस इज इक्वल टू पावर और इंडेक्स जेतेबेले log फॉर्म में देइथिबो हमें कोन करिवा जेतेबेले एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करिवा बेस टू द पावर इज इक्वल टू नंबर और वैल्यू तेने ए फॉर्मेट दिटा मन रखिथिबो हमें सेही भली प्रॉब्लम सॉल्व करिवो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देला फाइंड द वैल्यू ऑफ x वर्तमान x रा वैल्यू हमें बाहर करिवा हमर देछि log 64 to the base 2 that is equal to x तो मन रख जेतबेला हम एथरे समाधान कर ये log फॉर्मेट देछि हमें कोथरे करिया ना कन्वर्ट करिया प्रथमे कोथरे हमें करिवा एक्सपोनेंशियल फॉर्म सो दिस इंप्लाइज दैट to the power x ये होछि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट रो is equal to 64 implies that to the power x is equal to the power 6 to the power 6 होछि तुम्हारा 64 वर्तमान देखो दुईटांकर बेस समान रहिला ता अर्थ पावर निश्चित भाबे समान रहइबो तेनु मन रख जेतेबेला में इक्वल अछि पावर जदि समान थिबो ताले बेस समान रहइबो किबा जेतेबेला बेस समान थिबो ताले पावर भी समान रहइबो तेनु ये कोन जणाउछि
ये जण होची x इज इक्वल टू 6 तेणु आमर एथरे x रो वैल्यू हैला आमर 6 बी 2 देइची log x to the base root 3 is equal to 4 देखो log x to the base root 3 is equal to 4 देइची तेणु आमे ताकू वर्तमान पुणी कोन करिबा ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करिबा सो दिस इंप्लाइज दैट root 3 to the power x that is your 4 is equal to x or implies that x is equal to root 3 to the power 4 मतलब रूट तक वैल्यू केते ना दैट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट हमर एठी हमर रूट रे में 2 लिखा जाय नै किंतु एक्चुअली दिस इज योर 2 क्यूब रूट अछि दैट इज 3 फोर्थ रूट ओवर दैट इज 4 तेनु जेतबेले रूट ओवर लिखा जाय जदि किछि लेखा न होइतो जानिबो जे दिस इज योर 2 स्क्वायर रूट सो दिस इंप्लाइज दैट x to the power is equal to 3 to the power 1/2 to the power 4 कोन पाइना रूट रो वैल्यू होची 1/2 तेनु 1/2 into 4 आमे जति एटी कैंसिल करदा कोन रहिला 2 रहिला this implies that x is equal to 3 to the power 2 is equal to 9 तेणु वर्तमान x रो वैल्यू हमर आसी गला केते हमर आसीला 9 सेमती तुमर देइछि देखो थर्ड बिट रो क्वेश्चन देइछि log 10000 to the base x is equal to -4 log 10000 to the base x is equal to -4 this implies that हमें प्रथम सदा मन रख ताकू एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को कन्वर्ट करिवा x to the power -4 is for some technical problem जो माउथ रेटा को रिपीट कर दोचे log x to the base root 3 is equal to 4 हमें प्रथम ताकू कोथरे कन्वर्ट करिवा हमें ताकू कन्वर्ट करिवा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सो root 3 to the power 4 is equal to x is equal to root 3 to the power 4 so x is equal to 3 to the power 1/2 root अर्थ होची 1/2 so 3 to the power 1/2 into 4 so that is equal to 3 to the power 2 is equal to 9 our next question is कोन ना log 1000 to the base x is equal to -4 तार त कोन हो ना x to the power -4 is equal to 10000 so this implies that x to the power -4 is equal to 10 to the power 4 implies that acha तुम्हारा x to the power that is your x to the power -4 is equal to this is your 1/10 to the power -4 कोन पे हमर एठी पावर हमर समान करिया पड़िबो x बार कलियो गले so this implies that x to the power -4 is equal to 1/10 to the power -4 वर्तमान देखो हमर पावर समान रहिला ताले बेस समान रहिबो so x is equal to 1/10 माने केते त माने 0.1 so you find out x is equal to 0.1 तेणु आमे एई भली आबे सॉल्व करबा देखो आ उठे देइछि तोर माइनस रे देइछि पुनी 0.5 रे देइछि इन्वेंटेड करथिले बा ताकू बाहर करथिले के जॉन नापियर आ से जो नापियर बा तमरो जो नेचुरल लॉगरिथम रो बेस होछि तार e जार वैल्यू देइछि देखो 2.718282 अप्रोक्सीमेटली 2.718282 जेतेबेले हमर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हबो किंबा जेतेबेले हमर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस विभिन्न प्रकार टेस्ट अछि तुम पढिबो फ्यूचर रे दैट इज योर ची स्क्वायर टेस्ट बा विभिन्न प्रकार टेस्ट अछि सो इन दैट केस दिस बेस e is to be required और तुम्हारा नेचुरल लॉगरिथम इज रिक्वायर्ड ये गोटे प्रकार सिस्टम आ गोटे सिस्टम होची तुम्हारा कोन ना कॉमन लॉगरिथम को हम के बाहर करथिले ना हेनरी ब्रिग्स जो हेनरी ब्रिग्स बाहर करथिले से कोन करथिले ना ता बेस को 10 रखि देइथिले आ से जो 10 बेस अछि आ गोटे मन रख जेतेबेले क्वेश्चन ने कोनोसी बेस न दबो ता अर्थ भाबिबो जे एटा होची कॉमन लॉगरिथम किंतु नेचुरल लॉगरिथम रे मस्ट बी द बेस शुड बी e तेनु कॉमन लॉगरिथम रे बेस होची तुम्हारा 10 ये हमर मेनली प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रे हमें ताको यूज करथाय आ तार एग्जांपल त जानिलो
suppose our base achi e, suppose log 100 to the base e, so that is your natural logarithm. If that is log 100 to the base 10, so that is equal to your common logarithm. Jodi there is log 25, so this is also in the common logarithm because your base is not given. तेणु मन रख जदि बेस भी किसी मेंशन न कला ताले हमर दैट इज कॉल्ड योर कॉमन लोगारिथम. तेणु आम जदि दीटा भितर डिफरेंस देखिबा ये ताकू हेनरी ब्रिक्स कौन बाहर करथिले दैट इज योर कॉमन लोगारिथम आउ तुमर जॉन नापियर बाहर करथिले तुमर नेचुरल लोगारिथम. आ गोटे होची बेस होची e इन केस ऑफ नेचुरल लोगारिथम एंड 10 इन केस ऑफ योर कॉमन लोगारिथम. तब देखो नेक्स्ट स्लाइड को केते गुड़िए फंडामेंटल लॉज अच्छी. फंडामेंटल लॉज रे हमको देइची पांचटा लॉ अच्छी. मल्टीप्लिकेशन लॉ, डिवीजन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ और दैट इज पावर रेज लॉ. आउट अच्छी एक्सट्रैक्टिंग लॉ और दैट इज आल्सो नोन एज योर इवोल्यूशन लॉ. आउटे तुमर चेंज ऑफ बेस. तेणु आमे ताकू प्रूफ करिवा केमिति होउची. तुमर मल्टीप्लिकेशन लॉ कौन भाई ना देख लॉग mn टू द बेस a एटा होची बेस m into n. जिते बेले हम ताकू सेपरेट कर दबा देखो सेठी एडिशन होची कौन होची ना log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a. बर्तमान हमें प्रूफ करबा होची ना नहीं. देखो फर्स्ट लॉ हमें देखिबा मल्टीप्लिकेशन लॉ. हमें मल्टीप्लिकेशन काहे की करूछे ना जेहेतु m into n रही. सो log mn or m into the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. हमें आपको बर्तमान प्रूफ करिवा. देखो हमें कौन करिवा log m to the base a को नबा x log n to the base a को नबा y. If log m to the base a is equal to x, this implies that बर्तमान में गोटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर दबा कौन होबो ना a to the power x is equal to m. सेमती हमें नौचे log n to the base a is equal to y. ता अर्थ कौन होबो ना a to the power y is equal to n. a to the power y is equal to n. हमर लेफ्ट हैंड साइड कौन देछि mn देछि त माने एई दीटा को हमें मल्टीप्लाई करबा. सो इट इंप्लाइज दैट mn इज इक्वल टू कौन होबो ना a टू द पावर x इनटू a टू द पावर y. जेतु m इज इक्वल टू a टू द पावर x n इज इक्वल टू a टू द पावर y सेते बेले हमें तार बदल रे बसे दबा m बदल रे a टू द पावर x आउ n बदल रे a टू द पावर y. आमे जिते मल्टीप्लाई करिबा बेस समान थिबा पावर कौन करिबा एडिशन करिबा. सो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y. बेस समान अछि मल्टीप्लिकेशन अछि मन रख जिते एडिशन करिबा पावर एडिशन हि जिवो. जदि हमर गोटे अछि 2 द पावर 2 into 2 द पावर 4 केते हो 2 द पावर 2 plus 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म. देन हमें कौन पाइले थ्रू ना a टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू mn. वर्तमान एको हमें log फॉर्म रे को कन्वर्ट करिबा कौन होबो log. दिस इंप्लाइज दैट log mn इज इक्वल टू x प्लस y. mn टू द बेस a log mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y. log m into the base हमें नहीं चे x बदल रे भर्ती कर दबा केते ना log m to the base a प्लस log n to the base a. प्रूफ हे गला. तेनु ये होची तुमरा मल्टीप्लिकेशन लॉ. जेहेतु तुमरा एठी लेफ्ट हैंड साइड रे तुमरा रहउची मल्टीप्लिकेशन mn सेति हमें कहउची ताको मल्टीप्लिकेशन लॉ. आ गोटे अछि तुमरा डिवीजन लॉ. तेनु डिवीजन लॉ जतले करबा m n बदल रे कोन होची m by n हबो. तेनु से केस रे तुमरा कौन हम सब्ट्रैक्शन हम बा तुम्हें माइनस कर. तेणु तार रूल हूँ कौन देख सेकेंड हूँ तुम डिवीजन लॉ. देख डिवीजन लॉ रे
आमर आसीबो दिस इज योर m by n कहूँ प्रूव करिया पड़िबो दिस m by n देखो ये सब्ट्रैक्शन होची एटा होची तार फार्मूला बा गोटे फंडामेंटल लॉ सो log m by n to the base a that should be equal to log m to the base a minus log n to the base a तेणु देख आम से जिनस नहीं अर्थ आम कौन पाइबा ना a to the power x is equal to m पाइबा a to the power n is equal to y नवा जदि log m to the base a x नवा और log n to the base y नवा पूर्वटारे आम से पाइथिले किंतु हमर एठी कोन दैछे ना m by n सॉरी a to the power n is equal to a to the power sorry this is equal to a to the power y is equal to n ताले हम कोन हबो ना m by n तमाने हबो a to the power x by a to the power y जते बेले बेस समान थिबो किंतु हम डिवीजन होतिबो सेते बेले पावर कोन हे जिवो माइनस हे जिवो सो दिस इज इक्वल टू a to the power x minus y तेणु a to the power x माइनस हमर कोन आसिला ना m by n is equal to a to the power x minus y आमे जदि याकु लॉगरिथम फॉर्मेट कन्वर्ट कर दबा कोन हबो ना log m by n to the base a is equal to x minus y जोटा के मैंने चले x दिस इज योर माइनस y ता बदल रे वैल्यू पुट कर दबो ये तुमर हला कोन ना तुमर हला डिवीजन लॉ तापर अछि इन्वोल्यूशन लॉ और दैट इज आल्सो नोन एज योर पावर रेज लॉ पावर रेज रे कोन ना सेथिरे आसीबो log m to the power n to the base a so this should be n log m to the base a तमाने जो पावर अछि तुमरा आगु को पळे आसीबो log m to the base m to the power n to the base a it should be equal to n log m to the base a हम सही भली नबा let log m to the base a is equal to x implies that a to the power x is equal to m हमर बर्तन ए लेफ्ट हैंड साइड रे कोन कहूची m to the power n कहूची ता माने हमें कोन करबा this implies that m to the power n is equal to a to the power x to the power n यार जदि हमें पावर नबा n a to the power x to the power नबा so this implies that m to the power n is equal to a to the power xn वर्तमान हमें कोन करबा ना log फॉर्मेट को चेंज कर दबा so this implies that log तुमर वैल्यू कोन रहबो ना m to the power n m to the power n बेस कोन ना a is equal to nx or xn this implies that log m to the power n to the base a is equal to n into x बदल रे हमें कोन नै थिले log m to the base प्रूव हे गला तेनु आमे एई भली हमें सॉल्व करिवा जेते बेले पावर रेज देथिबो किंबा ताको हमें कहबा इन्वोल्यूशन लॉ आ गोटे इवोल्यूशन लॉ रहइबो से रूट ओवर रहइबो nth रूट ओवर जदि nth रूट ओवर होची ताले कोन होची दैट इज इक्वल टू 1 by n एठी n अछि एठी 1 by n हबो ताले हमर कोन हबो ना m to the power 1 by n सेमती एठी nx होतला एठी 1 by nx हबो तेनु 1 by n बदल रे 1 by n बसि जिवो तेनु देखो सेही फॉर्मेट रे 1 by n log m to the base a आउ गुटी लेला चेंज ऑफ बेस जदि बेस चेंज हुए ताले हमर केमति सॉल्व करिया देखो चेंज बेस रे अछि log m to the base a is equal to log m to the base b into log b to the base a एको हमें सॉल्व करिवा so that is your into that is given your plus so that should be into so log m to the base b हमें बर्तन कोन करिवा ना याकु नै जिबा x बा फर्स्ट log m to the base a को नबा x याकु नै जिबा y बा log m to the base b को नबा y
log a to b to the base a को नबा z ताले कोन हबो ना log एटा हमर आसी जबो a to the power x is equal to m ये आसीबो जते बेले कन्वर्ट करछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को b to the power y is equal to m याको इतले करबा कोन हबो ना a to the power z is equal to b बर्तमान ए m m दीटा को समान रहिछि सो a to the power x a to the power m is equal to a to the power x is equal to b to the power y आमे b पुनी कोन नै ना a to the power z तेणु a to the power x केते हबो ना b to the power by a to the power z b बदल में a to the power y by a to the power z पुट अप कर दबा a to the power z to the power y b बदल रे मोई वैल्यू टा पुट कर देली a to the power z कर देली पुट कर ताले कोन हला ना दिस इंप्लाइज दैट a to the power x is equal to a to the power y z हे गला जोटा कि देखो a to the power x is equal to y z हबो so we get the value जेतु बेस समान अछि ताले x is equal to y z तेणु x is equal to y z करेक्शन हबो ता गोटे अछि log m to the base b plus हे छै ताको मल्टीप्लाई हबो so these are the fundamental laws of logarithm you have to remember these your 5 laws one is multiplication law if multiplication is law given so log mn to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a plus हे छिबो सेकंड होची तुम्हारा डिवीजन लॉ जेतले डिवीजन हबो log m by n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a एटा माइनस हबो तापर जेतले पावर रेज्ड और इन्वोल्यूशन लॉ हबो सेतले कोन हबो ना दैट इज एट द टाइम ऑफ log m to the power n to the base a is equal to n log m to the base a next one is if that is evolution law or extracting roots in that case log nth root over m to the base a so that should be equal to 1 by n log m to the base a तापर बेस सेतले चेंज बा चेंज ऑफ बेस केस रहबो कोन ना log m to the base a is equal to log m to the base b then into log b to the base a so these are the certain your fundamental laws of logarithm then comes to some problems then how to solve these problems with the help of logarithm and these fundamental laws देखो ओटे कहूची log 3 रो वैल्यू दे देची केते ना 0.4771 log 2 रो वैल्यू देची so that is equal to 0.30103 से कहूची log 4000 रो बा 100 into 40 रो वैल्यू बार करिया पे हमें दी उपकार कर परिबा log 100 into 40 so this may be we find out log 100 plus log 40 ko law now this is according to your multiplication law then we get this is your this is equal to log 10 to the power 2 plus log 4 into 10 so ये भी सेमती हबो log 10 to the power 2 plus log 4 or to the power 2 plus log 10 तेणु log 2 log 10 so 2 log 10 अच्छा कहला 2 log 10 टा को लॉग को माने आणली so that is your power raised law so 2 log 10 बा एठी आसीबो गोटे log 10 अछि तेणु 3 log 10 plus log 2 तेणु 3 log 10 वैल्यू जानछो 1 जानछो log 10 रो तेणु 3 log 10 हला 3 then plus your log 2 रो वैल्यू होची तुम्हारा 0.30103 ताको ऐड कर देले 3 रे हम जति के आसिला ई तार आंसर आसीबो सेमती आउटे क्वेश्चन देइची log 2 by 3 to the power 150 सेकंड क्वेश्चन देइची log 2 by 3 to the power 150 त मने रखो जेतेबेले डिवाइड अछि हमें कोन करिवा सो दिस इज योर डिवीजन लॉ सो तार वैल्यू केमती बाहरिबो देखो log 2 by 3 to the power 150 प्रथमे कोन करिवा ना जेतु पावर रेज्ड अछि ताको हमें कोन कहबा ना दैट इज योर इन्वोल्यूशन लॉ
So this is equal to 150 log 2 by 3. आगु कोणी बारी 150. This is equal to 150 बर्तमान log 2 by 3 को law रे अछि ना, that is your in the division law. So that is equal to log 2 minus log 3. So this is equal to 150 into log 2 रो value दे देछि, log 3 रो value दे देछि, ताको माइनस करी आंसर बाहर करिवो. So we get, this is the your find the value if log 2 or 3 or something is to be given and find out the log values. तापर देखो question number 2. If log b to the base 10 and log 32 b to the base 6a is equal to 5, find the value of a. a रो value बाहर करिवा. देखो याको हमें केमती सॉल्व करिवा. So that is given log b to the base a is equal to that is 10. आ गोटे कोन देछि ना log 32b to the base 6a is equal to 5. हम एति देछि से कहूछि a रो वैल्यू हमें बाहर करिवा. तेनो हमें दीटा कोन करिया, प्रथमे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर दबा. So this implies that a to the power 10 is equal to केते b. a to the power 10 is equal to b. याको सेमति जदी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर कन्वर्ट कर दबा, 6a to the power 5 is equal to 32b. 6a to the power 5 is equal to 32b. हमें याको आउट टिके सिंपलीफाई कर दबा. This implies that 6a to the power 5 by 32 is equal to b. कम जो तमरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ने 32 टके पटे डिवाइड कर देली. This implies that 6a to the power 5 divided by 2 the power 5 is equal to b, or this implies that b is equal to your 3a to the तुम्हारा देखो 3a to the power 5, 6a by 2 the power 5. ऊपर 5 अछि पावर, तळे 5 अछि, तो कॉमन निकल. तेनो ए बी बदल रे हमें बर्तमान तक कोन करिबा, पुट कर दबा. That is your, so this implies that a to the power 10 is equal to 3a to the power 3 to the power 5, and that is your a to the power 5. वो सेपरेट कर देली. This implies that 3 to the power 5 is equal to a to the power 10 divided by a to the power 5. बेस समान अछि, हमें कोन करिबा, ताको माइनस कर दबा. जेते बेले माइनस करिबा, we get that 3 to the power 5 is equal to a to the power 5. It will 10 minus 5 है जिवो. So we get that is a to the power, that is your 5. तेनु देखो वर्तमान जेहेतु पावर समान रहिछि 5 5, ताहले बेस निश्चित भाबे समान रहिबो. ताहले a रो वैल्यू केते हो? So that is equal to 3. So a is equal to 3. तापर उटे क्वेश्चन देछि, क्वेश्चन नंबर 3. Prove the value by converting into common logarithm. आमे सिंपलीफाई सिंपल रे करि परिबा, किंतु से कहूछि कॉमन logarithm को कन्वर्ट करिक आमे ताको सॉल्व करिबा. हमर क्वेश्चन देछि कोन ना log 81 to the base 3 देछि. तन आमे कोन करिबा, ताको जदि वैल्यू बाहर करि परिबा इज इक्वल टू log 3 to the power this is 4 to the base 3 is equal to 4 log 3 3 is equal to 4. कारण बेस साउ पावर जते बेले बेस साउ वैल्यू एतले समान अछि, पावर केते 1, सो 4 into 1 is equal to 4. हम डायरेक्ट आंसर पाइबा. किन से क्वेश्चन पचारछि फाइंड द वैल्यू बाय कन्वर्टिंग इनटू लॉग योर कॉमन logarithm. तो से केस रे कोन हबो ना, देखो log आमे कोन करिबा ना 81 to the base 10 by log 3 to the base 10. तुमरो डिवाइड करी ताको कोन करिबा ना बेस रखि दबा 3. तेनो ये होछि केते ना सेही भली हमें दैट इज योर 4 log 3 divided by log 3 to the base 10. तेनो कैंसिल हे गला, दिस इज इक्वल टू 4. तेनो हमें एही भली कॉमन logarithm को देतो
आम कॉमन लॉगरिथम को कन्वर्ट करके चेंज करवा सेमती देख देछि log 125 to the base 64 सेमती आम करवा log 125 divide to the base 10 divided by log 64 to the base 10 तार वैल्यू बाहर करी तुम्हें सॉल्व करिवो तेणु ये भाव आम बर्तमान क्वेश्चन नंबर 3 पर्यंत कंप्लीट कले आम नेक्स्ट क्लास रू नेक्स्ट प्रॉब्लम्स वी हैव टू सॉल्व दैट इज द बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉज ऑफ logarithm. So this is the very important chapter you have to remember because at the time of difficult calculations it is very necessary. आमे गोटे जिनसर कैलकुलेटर रे रूट बाहर कर दबा किंतु फिफ्थ रूट ओवर आमे बाहर कर परिबानी कि तुमर 10th रूट ओवर किंतु केवल ये लॉगरिथम हमर जो टूल अछि बा तुमर लॉगरिथम साहाय्य रे आमे बाहर करबा तेणु या पई हमर दरकार कैरेक्टरिस्टिक केन बाहर करबा मांटिसा केमती बाहर करवा आंटी लॉगरिथम केमती बाहर करवा आमर सब टेबुल अच्छी लॉग टेबुल अच्छी आंटी लॉगरिथम टेबुल अच्छी आम ता साहाय्य केमती सॉल्व करवा आम प्रथमे ये प्रॉब्लम सॉल्व कला परे ताको आम कैरेक्टरिस्टिक मांटिसा आंटी लॉगरिथम एगुड़ा सब आम सो ओके सो दैट इज थैंक यू.